हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया था एंड वी आल्सो obtained द F2 ratios, F2 जनरेशन के जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो. नाउ टुडे वी विल डिस्कस ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें के अंदर हम विल जो कि इनहेरिटेंस ऑफ थ्री जीन्स का इनहेरिटेंस कैसे होता है वी विल डिस्कस रियली ब्रीफली. इट इज नॉट वेरी मच डायरेक्टली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, बट टू अंडरस्टैंड सम characteristic features like inheritance of skin color in human beings, it is controlled by three genes. So we should also talk about or study the basic understanding of trihybrid cross. तो trihybrid cross में हम देखते हैं कैसे inheritance होता है and how the ratio going to be changed. This is trihybrid cross. तो ट्राइहाइब्रिड में वी विल डिस्कस थ्री जीन्स एट ए टाइम. तीन जीन का इनहेरिटेंस एक साथ हमें देखना है और कैसे इसमें रेशियोज F1 जनरेशन में तो रेशियोज प्रेडिक्टेबल होते हैं, बट F2 जनरेशन में वी विल गेट वेरिएशन इन द रेशियो एज कंपेयर टू डाइहाइब्रिड एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सो let us represent three genes with alphabetical letter में ही हम three genes को represent करते हैं. and जब भी ट्राइहाइब्रिड क्रॉस की बात होती है, ट्राइहाइब्रिड we always start according to Mendel always started with a pure line. So the male parent or female parent can be a pure line, homozygous dominant or homozygous recessive. So we will take three genes. Suppose this is capital A represents one gene, capital B second gene, and capital C. It is a genotype of a male plant which is pure man. It is a male plant and a cross is made between the homozygous dominant as a female plant. So to represent homozygous we will represent it with small letter small b, small c, which is a female plant. So this is the method of representation of crosses, Mendelian crosses. So what will happen next, as in every cases, after the seed germinate and form a plant, and that plant will give rise to flower, and when the flower mature, pollination will take place due to meiotic division. So meiosis will take in case of male plants, and the pollen grains in the form of gametes will be formed, and here the gamete will be capital A, capital B, capital C. So capital A with capital B and capital C means again capital A with capital B and capital C. So there will only one type of gamete is formed, but its number may be 8, क्योंकि A B C 1, A B C second, again the second set. So we will have total 8 gametes. So it will. This is gamete. Their number will be 8. All are of the same type, identical gamete, because these are homozygous condition. Now, in case of female gamete, after meiosis, female will also form the same type of gamete. Meiosis, and the gamete will be small a, small b, small c, which is of 8 types.
So there is no need to make checkerboard for calculation of plants of F1 generation, because all the plants 8 into 8 64 plants will be of the same type and identical, and after fertilization, that is fertilization, we will get a single type of offsprings whose genotype will be capital A, small b, capital B, small c, and capital C. So capital B, small b, and capital C, small c. So these are the plants of F1 generation. Up to F1 generation, there is no any ambiguity, because it is probable that 8 into 8, 64 plants, all the offsprings of the same, that is homozygous, heterozygous plants, and they will also be identical to their male parent, because only the dominant character for gene A, B, and C will be expressed in F1 generation. The all dominant phenotypes will be present in the plants of F1 generation, which we also discussed in case of dihybrid cross. So up to this, it is very easy, but the ratio will change dramatically when we calculate the plants of, or when we discuss the plants of F2 generation, which will be formed after, जो कि इन्हीं प्लांट्स की अगर हम सेल्फिंग कराते हैं, then the ratio will change in F2 generation. So let us make the process for F2 generation. अब हम F2 generation में will take two plants from this, one male and another female, and calculate the probable genotypes of the offspring. ये भी अगर हम F1 जनरेशन में सिंपली जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें F1 जनरेशन में, तो जीनोटाइपिक रेशियो इज also equal to 64:0, and phenotypic ratio is also equal to 64:0, because only a single type of offspring is formed in case of in the first generation plants, जो कि मोनोहाइब्रिड में भी सेम था, डाइहाइब्रिड में, ट्राइहाइब्रिड. तो फर्स्ट जनरेशन की जो भी प्लांट्स होते हैं, they all are of same types and they express only the dominant character because they are heterozygous in nature. Now for F2 generation, we take the plants of F1 generation, capital B, small b, cross with capital A, small a, capital B, capital C, small c. This is male plant and this is female plant. After meiosis, gametes will be formed. Again here also, after meiosis, gamete will be formed. क्योंकि यहाँ heterozygous condition है, so the number of gametes will be more than one, and we have a very shortcut formula to calculate the type of gametes in case of heterozygous condition के चलते इसमें various combination possible है, and that is 2 power n. Total number of, there is a formula 2 power n equal to number of gametes in number or type of gametes, not only number, it is type of gametes in types of gametes, easily 2 power n, where n is equal to, where जो कि n क्या होगा, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन. n क्या होगा,
हेटेरोजाइगस जीन। और टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स की भी फॉर्मूला होती है 2 पावर n। टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स it is also 2 power n, but here n is equal to total number of genes only, not heterozygous genes. The total number of genes is 2 power n, and type of total number of gametes is 2 power n, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास जीन एक होते थे, तो नंबर ऑफ गैमेट्स एक ही तरह के होते थे, यानी 2 पावर हेटेरोजाइगस कंडीशन उसमें 0 था, इक्वल टू 1, 2 पावर 2 डाइहाइब्रिड क्रॉस में टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स 4 टाइप ऑफ गैमेट्स, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में टोटल 3 टाइप्स ऑफ गैमेट्स फॉर्म होते हैं। टोटल नंबर नॉट टाइप, इट इज द नंबर। और टाइप की और वैरायटी की अगर बात करेंगे तो n इज द हेटेरोजाइगस जीन। तो ट्राइहाइब्रिड में भी देखा था हमने, जो प्योर लाइन दिया था, तो देयर वाज नो एनी हेटेरोजाइगस कंडीशन, जो भी थे ऑल द 3 जीन्स वेर इन होमोजाइगस कंडीशन। सो फर्स्ट केस में, फर्स्ट जनरेशन में जो भी प्लांट्स होते हैं, द टाइप ऑफ गैमेट्स इज ओनली 1, बट हियर देयर आर 3 हेटेरोजाइगस कंडीशन, 1 2 3। सो टाइप ऑफ गैमेट्स क्या होंगे? 3। तो सॉरी 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 टाइप ऑफ गैमेट्स यहां प्रोड्यूस होंगे। जितने भी हेटेरोजाइगस कंडीशन होंगे उतने तरह की गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। So let us first write at least, एक बार हम इन 8 गैमेट्स को लिख देते हैं। कैपिटल A विथ कैपिटल B कैपिटल C, कैपिटल A विथ कैपिटल B एंड स्मॉल c, कैपिटल A with a small b and capital C, capital A with a small b and a small c, then a small a with capital B, capital C, a small a with capital B, a small c, again a small a with a small b, capital C, a small b, a small c. सो अगर हम टाइप्स की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप ऑफ गैमेट्स, और नंबर भी 8 है। नंबर 8 इसलिए है बिकॉज इट इज ट्राइहाइब्रिड क्रॉस 2 पावर 3, एंड वैरायटी इसलिए 3 है, इट इज ऑल्सो नंबर। और टाइप की बात करें इसमें वो भी 2 पावर 3 बिकॉज 3 इज अ हेटेरोजाइगस जीन। एक ये हेटेरोजाइगस जीन, दूसरा हेटेरोजाइगस, तीसरा। सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज 8। हियर आल्सो देयर विल बी 8 टाइप ऑफ गैमेट्स। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट सच अ लार्ज नंबर ऑन अ Punnett square and calculate the genotype or phenotype. So we will not do all those things in case of trihybrid. We will only calculate different types of ratio with the help of shortcut formula, which we discussed in also in case of dihybrid cross. तो इसके ये formula है for F2 generation genotypic ratio। सबसे पहले हम phenotypic ratio की बात करेंगे, तो we don't have to make a checkerboard for 64 plants.
we will go with shortcut formula. That is, phenotypic ratio will be 3:1 power 3, because it is trihybrid cross. Monohybrid cross के लिए 3:1, dihybrid cross के लिए 3:1 power 2. For trihybrid it will be simply 3:1 power 3. That is actually 9. That is equal to actually 3:1 square into 3:1. और 3:1 ये again dihybrid का हो जाता है. For dihybrid we remember that it is 9:3:1 multiply by 3:1. Finally, what will happen? It will be 27:9:9:3:9. 27:9:9:3:3:1. So what will be the phenotypic ratio? 27:9:9:3:3:1. इतने टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स, कितने टाइप्स होंगे फिनोटाइप्स? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 टाइप्स ऑफ फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स भी इसमें मिलेंगे, क्योंकि हमारा गेमिट्स भी 8 टाइप्स के हैं. तो टाइप विल बी 8 बट देयर नंबर विल बी डिफरेंट. यानी 27 विल बी of dominant type, both the characters will be dominant, both the 3 characters will be dominant. फिर 9, फिर 9, फिर 9, 3, 3, 1. So the ratio will be like this. Genotypic ratio को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. For genotype we have also a shortcut formula. Genotypic ratio will be here 1:2:2:1, which is for monohybrid. In case of F2 generation, so for trihybrid it will be a square of Q of 50. So it will be very longer one. So simply we can use it if in examination. It is rarely asked in examination, but for discussion of skin color we will use some concepts of trihybrid cross. It is only applicable for inheritance of skin color in human beings. It has trihybrid cross का एग्जाम्पल भी लिख लीजिए जो हमें स्टडी करना है. इसके एग्जाम्पल में स्किन कलर इन ह्यूमन बींग्स. So this is the significance of trihybrid cross. So we are done with all the types of crosses which is applicable or necessary for our NEET examination. Now let us make a summarized form of different types of ratio at a time. एक जगह हम ये F2 जनरेशन और F1 जनरेशन की रेशियोज को समराइज करके लिख लेते हैं. तीनों में मोनोहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस. Now we will summarize different types of ratios in all 3 crosses. तो सबसे पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो को लिखते हैं. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में phenotypic ratio is simply 4:0. Genotypic ratio is also 4:0. Dihybrid 16:0. 16:0. Trihybrid
64 is to 0. 64 is to 0. अब हम F2 जनरेशन का भी रेशियो लिखते हैं नीचे. F2 जनरेशन F2 जनरेशन में अगेन मोनो हाइब्रिड. Monohybrid ratio is 3:1 for phenotypic and genotypic 1:2:1. Dihybrid three is to one का square which becomes 9:3:1 and genotypic ratio will be 1:2:1 का square which can be calculated. And for trihybrid it will be simply cube of 3:1 and here also it will be cube of 1:2:1. So we can easily remember these ratios in short form for F2 and F1 generation. So this is all about our genotypic and phenotypic ratios in different types of crosses in Mendelian genetics. मेंडल का कंट्रीब्यूशन और जो हमें नीट के लिए पढ़ना है लगभग इतना ही है, क्योंकि मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर आता है इनहेरिटेंस ऑफ genes, inheritance of characters which are controlled by genes. We have two more terms which need to be understood, that is back cross and test cross, which we will discuss after it. So